एनसीईआरटी कोन कहूची प्राइमरी एक्टिविटी ना इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी भाई फर्स्ट क्लास रो कांसेप्ट भाई फर्स्ट क्लास रो कांसेप्ट व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी केही तो को इकोनॉमिक एक्टिविटी का कहबो जो थिरे गोटे वैल्यू जनरेट होतबो ट्रू if there is a value generation any activity which can generate value and can measure that value also money भी उसे भी कहै ना money means what it can measure the value and it should be a medium of exchange similarly economic activity means it should generate the value and it should also measure the value ताले तुम ता कहबो economic activity that means any activity where people directly depend on nature to produce goods जोठी गुड्स प्रोडक्शन करिया पे लोक माने डायरेक्टली नेचर ऊपर डिपेंड करले ताले से गला इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एग्जांपल मु घर बारी रे आम घर बारी पटे कदली गछ अछि सेथिरे बर्तन गोटे कदली कांधी पडिला से कदली कांधी काटी कि मु सब तो खाइ देली इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी नो 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 हाउ मेनी आर सेइंग नो एवरीवन सुपर दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक इज इट जनरेटिंग एनी वैल्यू नो बट मु कहूची भाई 5 फेणा पड़ी 3 फेणा मु खाइ देली 2 फेणा की देली is this going to become an economic activity yes it is going to be because it will generate value true कदली गछ मु लगौची ही ताको बिकिया पई जो लगौची is that going to be an economic activity होंगे नहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी हबो yes नाउ मत तमे कह जदी मु कदली गछ लगौची एंड कदली तयारी हला कदली को बर्तन मार्केट रे बिकली दैट इज प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी सेकेंडरी एक्टिविटी केमते हो भाई प्राइमरी हो सर प्राइमरी हो भाई डायरेक्ट मु नेचर रु पाइले ना सेटा ताको मु फर्दर प्रोसेसिंग थोड़ी करछि ना मु देखिछि भाई कि कदली गछटा मु प्रतिदिन जगी बसछि भाई बड़ होनी मु ताको निजे बड़ करूछि करूनी ना बाय डिफॉल्ट नेचर जहा मते देला ताको मु मार्केट रे बिकि देली दैट इज प्राइमरी सो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचर टू प्रोड्यूस द गुड्स गुड्स तो बाय डिफॉल्ट गछ ही देला गछटा मते देला किंतु गछ को तो मु बड़ भी कले ना तो टू प्रोड्यूस द गुड्स से कदली गछटा को प्रोड्यूस करिया पे से कदली आज प्रोडक्शन एथि पे हला बिकॉज़ मु पानी दउतली बुझियो ना बुझियो आई एम डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर मु तो केवल पानी देली आ बाकी सब तो काम नेचर कला सो एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर फार्मिंग फिशिंग फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर फार्मिंग फिशिंग फॉरेस्ट्री बुझियला प्राइमरी एक्टिविटी secondary activity any economical activity that depends on the primary sector output primary sectors output that transform them into produce good for example मु कदली बिकिली तमे आसिला for example आदित्य आसिला एंड कहला कि ओ भाई मते कदली दे दियो मु तुमको किछ पैसा दउती केते टका दबो ना भाबिनो दर्जन को 50 टका केते नबो 2 दर्जन 100 टका से नेकी गला 100 टका मते देले एंड 2 दर्जन मु दे दिगे करेक्ट जदी से 2 दर्जन रु गोटे दर्जन कंज्यूम कर देला किछि इकोनॉमिकल एक्टिविटी हला किछि इकोनॉमिकल एक्टिविटी 2 दर्जन रु गोटे दर्जन से कंज्यूम कर देला हबनी ना गोटे दर्जन कंज्यूम आउ गोटे दर्जन से जो काटा काटी करके सुखे की चिप्स छानी देला मार्केट रे बिक देला इज दिस गोइंग टू बिकम माय प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी बुझा पड़ती ना सेकेंड दैट मीन्स he was completely dependent on the primary output correct no primary output जोटा कि कदली गछ थिला कदली सेटा होती मोर प्राइमरी सेटा से किनी के नेला आ ताकू 50% से कंज्यूम गला आ 50% को कंप्लीटली प्रोडक्शन रे चेंज कर देला नुवा गुड्स तयारी कर देला कोन ना कदली चिप्स करेक्ट नो बनाना चिप्स एंड ताकू बिकी देला जतले से थ्रू वैल्यू जनरेशन होला तो इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेक्ट नो दैट मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी that depends on the primary sector output and transport them into produce good that is what we call secondary activity is that clear so processing any raw material processing this is extraction of raw material nature ru tame extract kolo raw material a gote raw material mili gala pare ta weaving cloth is primary or secondary correct question ko nije ko whether weaving of cloth is primary or secondary by UPSC ro question weaving of cloth primary or secondary how many of you are saying secondary secondary super काहेकि फास्ट तो तुम
वेबिंग भाई से नेचर रु तुमको मिली वेबिंग तुम नेचर रु मिली तो तमे कहा ऊपर गोटे डिपेंड करू ना तुमको तुला दरकार ना कपा कपारू तापर तुम स्टार्ट करबो थ्रेड बनेबा तो मिनिमम गोटे जिंस ऊपर तुम नेचर ऊपर डिपेंड कलो तो ये जो कपार प्रोडक्शन दैट इज प्राइमरी डायरेक्ट फार्मिंग हों कि नहीं दैट इज प्राइमरी वंस कपा मिल गला कपा को तुम ट्रांसफर करूछ तुला रे सॉरी नॉट तुला रे सूता रे करेक्ट नो देन दैट विल बी व्हाट सेकेंडरी 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 करेक्ट 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 तावाने भाबनी जे भाई आज सूता मिल गला सूताटा को बर्तन मो ड्रेस तैयारी करबे ड्रेस टाइज टॉर्चियरी ना 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 भाई ड्रेस भी सेकेंडरी प्रोसेसिंग होती ना प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल को तुम प्रोसेस करो टर्शियरी केतले आसीबो टर्शियरी ना all those economic activity very important भाई economic activity means you are not consuming you are producing certain value बुझी होची that provides support to people involved in primary or secondary activity प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज रे लोकों को सपोर्ट दबा बैंकिंग सपोर्ट दबा ना दबो ना भाई मु तमे वेबिंग कलो या फिर तमे कदली चिप्स किनिलो देन से जो तेल फेल दरकार तापे गोटे इन्वेस्टमेंट दरकार तो से जो जिंस पत्र से कड़ेई खड़िका कि जहां अछि से चटू करेक्ट नो देन गैस ये सब पे इन्वेस्टमेंट दरकार के तुमको हेल्प करियो बैंक हेल्प करियो ताले बैंकिंग एक्टिविटी फाइनेंशियल सेक्टर विल इट बी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कोन कोटा टर्शियरी anyone having any doubt tertiary correct fine super tertiary so any software development if I am doing any software development for you that will be also tertiary development why because kaha ko तुम primary और secondary kaha को तुम help करछि transportation banking communication health care जहां तुम देखियो health care primary और secondary को help करियो ना communication primary और secondary sector रे जो माने अछन तांको तो help करियो ट्रांसपोर्टेशन ए मानु की नबानिया करियो हंगने बैंकिंग ए माने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वाला एक्टिविटी जो माने करछन तांको हेल्प करियो सो ए सब हे जो तमर कोन टर्शियरी एनी डाउट क्लियर ट्राई दिस क्वेश्चन दे कोन ना फॉरेस्ट्री इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी वाटर सप्लाई इट इज ए टर्शियरी एक्टिविटी सोलर पावर इट इज ए सेकेंडरी एक्टिविटी ट्रेड एंड लॉजिस्टिक इट इज ए टर्शियरी एक्टिविटी बर्तमान मते कुह ए चारि टांगरो हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड वन only two only three and D is for all only three only two okay Rina why you are saying only two which one you are saying those are the correct one and which two are wrong what do you think सर ट्रेड को मु सेकेंडरी रे इंक्लूड कर देतली ता टर्शियरी होबो ना ट्रेड तो टर्शियरी ना ट्रेड कहा किए करूची ट्रेड सेकेंडरी रे तमे केमि न भाई ट्रेड रे किछि रॉ मटेरियल प्रोसेस करतो तमे सेकेंडरी कांसेप्ट तो से है ना कि भाई मु रॉ मटेरियल किछि प्रोसेस करतो दरकार तो रॉ मटेरियल किछि प्रोसेस होनी तो रॉ मटेरियल जदी प्रोसेस होनी सॉरी ये टर्शियरी लिखा छै तो ठीक अछि सोलर पावर सोलर जदी होबो प्राइमरी हों कि नहीं सोलर जदी होजी प्राइमरी सोलर पावर कोन हिथिबो सोलर को जे कंज्यूम करके पावर जनरेट करती ट्रू ताले सेकेंडरी किछि भूल नहीं इट इज इंडस्ट्री वाला कांसेप्ट सेकेंडरी वाटर सप्लाई वाटर होची प्राइमरी बट वाटर सप्लाई रॉ मटेरियल को यूज करके सप्लाई करा हला प्रोसेसिंग करा हला कोन जे टर्शियरी इज इट टर्शियरी गॉन फॉरेस्ट्री इट इज टॉकिंग अबाउट प्राइमरी यस ठीक अछि तो तीनटा ठीक अछि ओनली 3 एनी डाउट